वेलकम स्टूडेंट्स IOQM 2023 की सीरीज में आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छा 5 मार्क का क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, सपोज x इज अ रियल नंबर सच दैट साइन ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस साइन टू पावर 4x इज इक्वल टू 13 पावर 4। कंप्यूट करना है cos ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस cos टू पावर 4x। सो क्या दे रखा है, साइन ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू पावर 4x इज इक्वल टू 13/14। तो सबसे पहले हम लोग इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हैं। लेट्स से हम इसको बोल देते हैं अल्फा। तो अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x। सो इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू पावर 4x को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x, जो कि बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉस टू द पावर 4x, विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सो विच इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos to the power 4x. Okay, so what you see here is this 1 plus cos square x plus sin to the power 4x is actually equal to 1 plus sin square x plus cos to the power 4x. That means we are given sin of alpha is equal to sin of alpha is equal to 13/14. We are supposed to find out what is cos of alpha equal to. बहुत इजी हो गया। सो ये प्रॉब्लम यूएस के एक ओलंपियाड में आई थी। एंड स्टूडेंट्स क्या करते हैं, साइन अल्फा इज इक्वल टू 13/14। सो कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 14 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14 by the formula perpendicular upon hypotenuse and base upon hypotenuse. So most of the students have given the answer 3√3/14. But remember, this is wrong answer. This approach is wrong. If I say then cos square alpha cos square alpha is equal to 1 minus sin square alpha, which will give us cos alpha is equal to plus minus 3√3/14. So basically we all know that sin alpha is positive in first and second quadrant. So cos alpha can be positive if it's in the first quadrant, or it will be negative it's in the second quadrant. So we have to check whether this alpha lies in the first quadrant or second quadrant. Okay, so what is alpha? This is alpha. So let's come to alpha. Alpha is 1 plus
cos square x plus sin to the power 4x, which is equal to 2 minus sin square x plus sin to the power 4x. So let's put sin square x into t. Let's say sin square x is equal to t, then alpha is equal to t square minus t plus 2. So now this is an quadratic expression where t is sin square x. So t is bounded by t is greater than equal to 0 and less than equal to 1. T is greater than equal to 0 and less than equal to 1. So if I draw the graph of this quadratic expression, what will you get? When t is 0, alpha is 2. And when t is 1, again alpha is 2. So between t is equal to 0, alpha and t graph, we see that 0 and this is 1. And we see that the value of alpha is minimum at t is equal to half. You know, you can easily see by this, by the quadratic equations, you know that alpha is minimum at t is equal to half, and at t is equal to 0 and t is equal to 1, alpha is 2. So what is the minimum value of alpha? So the maximum value of alpha is 2 and the minimum value of alpha is 1 by 4 minus 1 by 2 plus 2, which is 2 minus 1 by 4, which is 7 by 4. So alpha lies between 7 by 4 comma 2. So you can clearly see that 7 by 4 is greater than pi by 2 and 2 is less than pi. That is, the value of alpha is in the second quadrant. So this angle theta 1 plus sin square x plus cos to power 4x lies in second quadrant. And we know that in second quadrant cos theta is negative. So the value of cos of 1 plus sin square x plus cos to power 4x will be minus 3 root 3 by 4. So the correct answer will be cos of 1 plus sin square x plus cos to power 4x is equal to minus 3 root 3 by 14. So student, this was a very good question. अगर तुम लोग देखोगे तो इसमें सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उसका कॉन्सेप्ट आ जाता है. देन ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट की साइन थीटा कॉस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं ये आ जाता है. और उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज अटेंड करते हैं कहाँ पे मिनिमम वैल्यूज अटेंड करते हैं वो कॉन्सेप्ट आ जाता है. एंड उसके अलावा किसी भी फंक्शन का जो डोमेन होता है कि फंक्शन उसका डोमेन क्या है और उस डोमेन में उसकी रेंज क्या होगी वो कॉन्सेप्ट भी आ जाता है. सो बेसिकली दिस क्वेश्चन कवर्स लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट, trigonometric identities, trigonometric ratios, concept of first quadrant, second quadrant, whether the trigonometric ratios are positive and negative, and quadratic equation ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं. एंड फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट की फंक्शन किस डोमेन में है और उस डोमेन में उसकी रेंज क्या रहेगी. सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और ये IOQM के लेवल के हिसाब से 5 मार्क का क्वेश्चन है. होप यू लाइक दिस क्वेश्चन. Subscribe to my channel and keep learning for IOQM.